Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. कैसे? Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. ठीक है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन जरूर कर रहे होंगे। मैं स्कार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हॉगवर्ट्स लेगेसी के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने लाइब्रेरी के रहस्य को सुलझा लिया था और वहां पर दोस्तों हमें दो चीज़ों के बारे में पता लगा। सबसे पहले तो हमें रैकेम जो जादूगर है उनकी एक याद, उनकी एक मेमोरी मिली, जिसमें हमने देखा कि रैकेम की तरह ही बहुत सारे एंशिएंट मैजिक को यूज़ करने वाले जादूगर थे। और इसके अलावा एक और चीज़ हमें पता लगी कि हमारी तरह ही एक स्टूडेंट थी जो हॉगवर्ट्स में 5th ईयर में आई थी, जो एंशिएंट मैजिक को पहचान सकती थी। अब मैं नहीं जानता दोस्तों कि आखिर जादूगर रैकेम ने क्यों ये याद वहाँ पर छोड़ी थी। इसके अलावा दोस्तों हमें एक जादुई किताब भी मिलती है जिसे हम प्रोफेसर फिक के पास लेके जाते हैं। प्रोफेसर फिक उस किताब को चेक करते हैं और बताते हैं कि इसमें से कुछ पेजेस फटे हुए हैं, जिसका सीधा मतलब ये है दोस्तों, हो न हो इस किताब तक जरूर कोई पहले भी पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों प्रोफेसर फिक हमें कहते हैं कि वो इस किताब का अध्ययन करेंगे और इससे जो भी चीज़ें उन्हें पता लगेंगी वो हमें बताएंगे। वो हमें कहते हैं कि इस दौरान हमें अपनी जादुई शक्तियों को जितना हो सके बेहतर और ताकतवर बनाना है, ताकि आगे के सफर के लिए हम लोग तैयार हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं कि हॉगवर्ट्स लेगेसी के आज के इस एपिसोड में अब कहानी आगे क्या रुख लेती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में हमारे देखो कुछ ये टास्क हैं। सबसे पहले तो ये जो कुछ मेन मिशन है जिसमें कि क्या लिखा हुआ है, लिव एज अ स्टूडेंट अंटिल प्रोफेसर फिक रिटर्न्स, अटेंड हर्बोलॉजी क्लास, मीट विद नेटी। हाँ, ये दो मेन हमारे टास्क हैं जो मेन स्टोरी क्वेस्ट हैं। इसके अलावा साइड क्वेस्ट में हमारे पास है एक तो ये क्रॉस बाउंड्स राउंड 3 और स्पेल कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस 2। हाँ, ये भी हमें ज़रूरी है, ये तो हमें करना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मुझे लगता है हम लोग मेन क्वेस्ट को जो भी चीज़ें हॉगवर्ट्स के अंदर है ना वो करेंगे, क्योंकि जो ये नैटी के साथ जो हमारी मीटिंग है ना वो हॉगवर्ट्स के बाहर है। तो एक काम करते हैं, पहले हर्बोलॉजी क्लास के लिए चलते हैं। ठीक है, चलिए अपनी हर्बोलॉजी क्लास के लिए। पता नहीं अब यहाँ पे हम लोग हमें क्या सीखने को मिलेगा, देखते हैं। ओह, ग्रीन हाउस फ्लू फ्लेम्स। ठीक है, यहाँ का फ्लू फ्लेम्स भी एक्टिव हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्वेस्ट है कोई। Sebastian. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. ये लेडी की ड्रेस कितनी प्यारी है ना, बाल देखो कितने प्यारे हैं। Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ओ तेरी, इसके नीचे जरूर कुछ देखना अजीब सा चीज होगा। ओह, मैंने बोला था ना आपको। ओह, क्या चीज थी भाई? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket.
putting the mandrake right at ease. मैंड्रैक तो करता क्या है ये मैंड्रैक? Reparo. हो ये जादू मुझे सबसे सही लगती है सीरियसली. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. हर्बोलॉजी क्लास हो गई? That's Now all? for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. Dittany at all our get potting started. tables. I need to have a... I wonder if hippogriffs like knotgrass. क्या बात करना चाह रही है? ठीक है पहले हम इससे प्रोफेसर गालिक जी से बात कर लेते हैं. हाँ जी मैडम जी. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I enjoyed it, हाँ seriously. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. ठीक है. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? ये जितने सीड्स करती क्या है भाई? Properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. ठीक है. The leaves of this medical herb are used in Wiggenweld potion. The tiny seeds can be purchased at the magic neep and can be grown in pots of any size. ठीक है. मेरे पास जितने सीड्स हम लोग वहाँ से हॉग्समीड से खरीद के लाए थे. ठीक है कि मेडिकल हर्ब है. ओके. इससे शायद हम लोग अपने पोशंस बना सकते हैं. ऐसा कुछ होगा. The leaves of this medical herb are used in Wiggenweld potion. हाँ वही. 9 मिनट 54 सेकंड्स में 5 ईल्ड कर देगा ये. बढ़िया है. ठीक है यार. ओके. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. ओके. I'll let Professor Sharp tell you about that. ठीक है. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find Chinese that chomping some cabbage? plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. ठीक है. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. ओके. मेरे क्लासमेट लिएंडर प्रूवेट वो है शायद ऊपर. ओके. Hello. हाँ Saw जी. you on your way to Hogsmeade the other day. हाँ जी. Nice to meet you. I'm Leander. Nice to meet you too. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But Gee. your lead. Okay. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. अच्छा अच्छा ऐसे और फिर कैबेज सेलेक्ट किया. ठीक है. और फिर इस पे टॉस कर देना है. ठीक है मैंने सेलेक्ट कर लिया है. अच्छा ऐसे. उत्तरी. ओह Look at that. They'll chomp on anything they can यार get कितना their सही है. mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. सही में फाइट के काम फाइट दौरान ये काम आएंगे. Well, imagine that wasn't a dummy.
I suppose they could come in handy. Sure, but this is just a dummy. I was imagining it already. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, सही बात even है. if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. ठीक है, चलिए. ये तो हमने. I'll see you back in class. Okay. I should return to the Professor Garlic and tell her I tended to Chinese chomping cabbages. Hopefully she will allow me to keep any extras I picked up. कलेक्ट कर लेते हैं भाई, काम ही आएगा ये तो. बड़ा सही है यार. लिटरली मतलब फाइट्स के दौरान काम आएगा ये. कैसे बोला था? सिंपली ये करके ये. हाँ ये फेंक दिए देखो. नाइस. ठीक है, हमें क्लास में वापस जाना है. मैम के पास, प्रोफेसर गार्लिक के पास वापस जाना है. लेट्स गो. यहाँ पे क्या है? ये कहाँ आ गया मैं? वो गलत आ गया भाई. I've always said that travel. And with that helpful चलिए. reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. As am I. Plants offer so much. Magical plants have so much to offer. सही बात है. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. बढ़िया. चलिए, ये वाला हर्बोलॉजी की क्लास हमारी हो चुकी है. अब ऐसा करते हैं. ये देखो, हमारे सीड्स भी अभी उकरी डिटने सीड्स. Cost me my damned hearing. इनसे बात करने के लिए ऑप्शन आ रहा है. Make anything grow. We must first understand it. ठीक है, एक काम करते हैं, क्लास से बाहर निकलते हैं. I should think Professor Garlic would be more careful with her mandrakes. हाँ भाई, मैंड्रिक्स ने तो बड़ा बोलता है ना, एकदम शोर शराबा मचा दिया था. ठीक है, हमारे कुछ वो 2 साइड क्वेस्ट हैं, वो करते हैं पहले. मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका है. ठीक है, ये जगह सही है. ओके. द नेक्स्ट क्लास आई मस्ट अटेंड इज पोशंस. इट्स टॉट बाय प्रोफेसर शार्प. ओके, अच्छा कोई एक नया मेन क्वेस्ट आया क्या? हाँ, एक मिनट. द गर्ल फ्रॉम गार्डो पोशन क्लास. चलिए ठीक है, पोशंस क्लास भी ले लेते हैं. लेट्स गो. Inconvenient travel was before I invented flu powder. ओके. ओ भाई, इतने क्लासेस के जो आर्किटेक्चर है इतना मस्त लगता है ना. He knows more than he's letting. चलिए क्वेस्ट बिगिन करते हैं. ओह, ये तो कोई बूढ़े से टीचर लग रहे हैं. Potions is अच्छा, one ये of the बंदे. most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. ठीक है. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for हाँ, क्योंकि इनको भी कुछ चोट लगी हुई थी, देखो ना, ये लंगड़ा के चल रहे हैं वो देखो. completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. और इसी के लिए वो डेटिनी सीड्स You चाहिए. never know when you might need it. बिल्कुल सही बात है. Please begin. और यही वो प्रोफेसर है जो इन प्रोफेसर फिक्स से मिलने आए थे उस टाइम जब हम लोग बुक चोरी करके आए थे. ओके. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ओए, ज्यादा डाल दिया इसने. 2 की नहीं.
भाई अब अपने हीलिंग पोशंस बनाने लगे हम लोग। I see most of you have not forgotten how to stir. वो उसने बना भी लिया हमने, वाह। Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. ठीक है। Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. ठीक है। किसी पोशन के बारे में, collect Ashwinder eggs, collect dark mongrel for, ओ भाई साहब। My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. चलिए ठीक है। I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until भाई उल्टे काम करवा रहा है, हमसे चोरी करवा रहा है। Ask me when you have the feather. ठीक है। अब 3 टास्क हो गए। I think ये इनका ऑफिस तो नहीं है। हाँ। Your potion should not be that color. ठीक है, ये है mongrel for, ओके। mongrel for मिल गया हमें, और ये आई थिंक होगा Ashwinder eggs, और उसके लिए जो feather चाहिए वो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। ये रहा वो feather। ठीक है। Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. पता नहीं क्या बना रहा है। ठीक है, चलिए हमें अब प्रोफेसर शॉप के पास नहीं, हमें अपने अच्छा यहाँ पे जाना होगा। ओके। पोशन स्टेशन अनलॉक्ड, न्यू आइटम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? आई नीड टू ब्रू द एड्रेस। अच्छा ठीक है, सो डेफिनेटली हाँ ठीक है, ये एड्रेस पोशन हमें बनाना है। ओके, लेट्स डू इट। एड्रेस पोशन ये है ना, अ पोशन दैट एनहांसेस द ड्रिंकर्स डिफेंस बाय कवरिंग देम विद अ ड्यूरेबल रॉकी स्किन। ओ भाई ये गजब है भाई। और ये क्या है? फेलिसीस enhances the drinker's chance of success in their endeavors. Oh gajab. Maxima increase the drinker's spell damage for a limited amount of time. Invisibility potion, focus potion reduce the drinker's spell cooldowns. Oh nice. Creates a storm around the drinker which will stun and damage nearby enemies. J. Pippin's potions. अच्छा ठीक है, ये हमें Hogsmeade में मिलेगा। ओ भाई ये तो गजब है यार। और पहले हमें एड्रेस पोशन बनाना है। Let's do it. It will take 27 seconds. ठीक है, ऐसे कल करके जाएंगे। गजब यार, है ना? सही है ना? And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Wait. पटाखे फूटने लगे। What happened? ये गैरेथ पागल है यार। Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. ओ उसने पॉइंट्स कम कर दी ग्रिफिंडर हाउस के। ठीक है,
एड्रेस पोर्शन कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. ओह शिट, इन्हें पता तो नहीं लगा हमने उसकी इसकी मदद की थी गैरत की। एक मिनट, हमें ये देखिए ये पोर्शन मिल चुका है। नाइस, कैबेजेस हैं, बढ़िया। ओके ठीक है, हमें अच्छा ठीक है प्रोफेसर ब्लैक से बात करनी है, प्रोफेसर शार्प से बात करनी है, सॉरी। I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Shit. झूठ बोल लेंगे तो इनको पता है। Sorry, I'm sorry about that. Sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Okay. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend दोनों classes आपस में मतलब related है, काफी ज़्यादा connected है. brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay, now what? ये quest तो हमारा I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Class is dismissed, bro. ठीक है दोस्तों, आई थिंक मेन स्टोरी क्वेस्ट हमारी हो चुकी है। द गर्ल फ्रॉम उगाडाओ, हाँ ये बचा हुआ है जिसके लिए हमें हॉगवर्ट्स से बाहर जाना है और वो हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम लोग करेंगे कुछ साइड क्वेस्ट जिसमें कि है एक तो क्रॉस वॉन्ड्स वाला और ये स्पेल कॉम्बिनेशन भी वहीं हो जाएगा। इसमें हमें उससे मिलना होगा ना, वो भाई का नाम क्या था अपना, बैटल बाय। ठीक है चलिए यहाँ चलते हैं। ठीक है ये रहा बैटल बी, चलो भाई जी। हेलो लुकन, इज द फाइनल राउंड ऑफ क्रॉस वॉन्ड्स रेडी? हाँ डेफिनेटली। Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. ठीक है। Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? नात्सा है, सेबेस्टियन। डेफिनेटली मेरी पार्टनर तो नात्सा ही है भाई, नात्सा है। Yes, Natty. Then let's get started. Let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 4 लोग हैं। Damn, हम लोग 2 हैं। 2v4 हो रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई चलिए, ओ भाई साहब 4 बंदे। Tego. Accio. Incendio. There goes my way. Incendio. Leviosa. बढ़िया 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 बढ़िया। बहुत बढ़िया। गया 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 ये, बढ़िया 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 बढ़िया। ए बढ़िया। ये मेरी तरफ ही क्यों कर रहे हैं अटैक भाई? मुझे थोड़ा इसको खत्म कर इसे। बढ़िया 2 बंदे गए। इजी 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 इजी। खत्म कर इसको, फिनिश कर।
आ जाओ, तुम्हारे तो बैंड बजाता हूँ। आराम से भाई, हारना नहीं है। बढ़िया, यही मौका है, निपटा दे इसे। निकल यहां से, चल। बहुत मजे ले लिया यार, मतलब बहुत ज्यादा। एक नंबर भाई, एक नंबर। What a victory! You've won the tournament! खतरनाक भाई। I will say I got lucky, man. Seriously. I'm just pleased. लो, मैंने दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लिया। And we're pleased to have such a gracious champion. बढ़िया। Now, to the victor goes the prize! Oh shit, क्या है प्राइस? And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. बढ़िया। Thank you. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. ठीक है, बढ़िया। चलिए, एक साइड टास्क हमने कर लिया, हमें एक ड्रेस मिली है, देखते हैं। वो मज़ा आया, बहुत टफ था यार, सीरियसली टफ था। ठीक है, क्लोथिंग्स में आया है, आउटफिट में आया है हमारे पास। ओके, ओ बट ये इससे तो डिक्रीज हो रही है वैल्यू। नहीं भाई, इससे हमारे पास अच्छा है भैया। ओके। Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? ओके, चलिए देखते हैं। Why bit more of a challenge? Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. ठीक है। If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ओके, पहले एक्यो, फिर फायर वाली पावर और फिर लेवियो। ठीक है। गलत हो गया। Something. ठीक है, फिर से ओके। Nicely done. ये कॉम्बिनेशन भी चलता है, सही है यार। नाउ व्हाट? अब है लेवी। अच्छा, लेवी ऐसा करना है पहले तो। अच्छा, फिर ये मारना है। 2 3 एक्यो था ना? हाँ, एक्यो था। अरे मारा ही नहीं, रुको भी। 1 2 3। ठीक है, फिर से कर दें। कम ऑन, फिर से एक्यो। अरे ओ सॉरी, एक्यो नहीं, लेवियोसा। क्या गलती कर रहा हूँ मैं इसमें? ठीक है, चलो ये तो हो गया। अगला एक्यो। अच्छा ठीक है। नहीं, आराम से। One more time. एक ही बार मारना था। ओके। चलिए, ओह बड़े टफ कॉम्बिनेशंस थे यार। चलिए, ये हो गया, बढ़िया। Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. सही में, राहुल के बिना तो नहीं कर पाते। Thanks, Lucan.
You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Okay, बढ़िया. चलिए ये वाला क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया. बढ़िया. ठीक है, नेक्स्ट इज एक मिनट, क्वेस्ट मैप खोल लेते हैं अपना. हाँ, मेन क्वेस्ट में देखो ये रह गया है, सीधा ये करते हैं अब. ठीक है, देखो इसका क्या है. Natty on I has asked me to meet her at the hamlet called Lower Hawksfield, just south of Hogwarts. I should see what she wants. Meet Natty on I in Lower Hawksfield. चलिए, ठीक है, फटाफट Natty के पास चलते हैं. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. हाँ, इसको तो बता ही सकते हैं यार, ये लड़की अच्छी है यार. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. Achha. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. सही में ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए हेल्प होगी इससे. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock, well, all the more reason they must be stopped. I think हम लोग इनको उन दोनों को मारने के लिए तो नहीं चाह रहे. Runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. ठीक है. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. ठीक है. Be on your guard. अच्छा, ठीक है. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? The girl from Ugadao. ठीक है, तो हो गया. ये चीज़ बड़ी अजीब हो गई. ठीक है, नैटी बोल रही थी कि भाई वो रुकवुड के जो उसको बंदा है ना हार्लो, उसके मतलब एक तरह से ना उसकी छानबीन करती रहेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी, और वो लोग शायद कोई शिकार करने वाले हैं. उसकी है ना, उसकी खबर ये लोग पुलिस ऑफिसर को देने वाले हैं. और बोल रहे थे कि जब भी वो तैयार होगी उनको पकड़ने के लिए, रंगे हाथों पकड़ने के लिए, वो हमें बताएगी. ठीक है, ये वहाँ पर हमारे लिए कुछ टास्क है शायद. और ये कौन है? ओह, I never thought Ramrock's loyal. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings.
ठीक है, एक साइड मिशन है. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. ठीक है. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. स्टोरी क्वेस्ट में ट्रायल्स ऑफ मर्लिन देखा ना. वुमेन नीड हेल्प जस्ट अक्रॉस द वाटर बियॉन्ड द डॉक. ठीक है कि स्टोरी क्वेस्ट मेन क्वेस्ट इसे तो कर ही लेते हैं पहले. इसके बाद फिर हम लोग ये जो गॉब्लिन का क्वेस्ट है उसे करेंगे. वैसे ये कैप जो है ना मेरी ड्रेस से मैच कर रही है. To that goblin banker at Gringotts. I shouldn't be surprised at what happened to Orn. हाँ वही मैं जो बैंक का वो गॉब्लिन था उसे तो वही मार दिया था उसने. They must have come this way. Think. ठीक है क्या हो रहा है यहाँ पे? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. ओए कुछ गुंडे हैं. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Rookwood के बंदे हैं ये. The devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I hope you have your affairs in order. बढ़िया. Trying to make me a बढ़िया. और ये क्या गायब? ये कौन है? ओ और बंदे आ गए. 3-4 बंदे आ गए. भाई ये कौन है? The collection section of your field guide has been updated with a new enemy type. You may learn valuable insights on enemies such as their weakness in certain spells. Okay. Oh. Anywhere with you. You'll take this. Release me! ये वाली खतर. ओ डबल बैक टू बैक मार रही भाई ये. बढ़िया. ठीक है वो तो गई. ओ ये भी है. ओ शिट. In the clouds, this one. That's the best you can do. Accio, is that the presumption? ओ भाई ये बड़े खतरनाक है यार ये मैजिशियन. बढ़िया. ओ डबल मारती भाई ये याद रखना. ठीक वो तो गया. Time to use ancient magic, bro. Oh. जबरदस्त. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. भाई ये बंदे सच में बड़े खतरनाक थे भाई. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. Rookwood के बंदे ही थे ये सारे. Keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Research, ठीक है हाँ. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. ठीक है बढ़िया यार. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Okay, बढ़िया.
I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. Okay. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Okay. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. ये अच्छा ठीक है. ये Mallowsweet. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Oh, three. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I'm curious about these pyres. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. Fires are meant to lit. अच्छा 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 ठीक है ठीक है. ओहो मुझे इसमें आग जलानी है भाई. ओके ओके ओके. Incendio. थोड़ा पास आके करना पड़ेगा. जहां तक मुझे लगता है इसमें मुझे आग जलानी है. हाँ ये देखो मैंने बोला था ना आपको. उसने बोला ना जब लिट. ठीक है सारे पिलर्स को आग लगानी पड़ेगी. ओके डन. और हो ही गया. Curious. The pyres are back where they started. ओ अच्छा 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 कुछ पैटर्न है क्या? एक मिनट. Incendio. अब इसको जला के देखता हूँ शायद. ठीक है दोनों नीचे. आई थिंक वर्क करना चाहिए. हाँ हो गया. ओह How beautiful! What a day! I can hardly believe it. ठीक है 2 ट्रायल्स है इस तरह के. ओके I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. ठीक है. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ओके कंप्लीट मेन क्वेस्ट में. ठीक है ट्रायल्स ऑफ मर्लिन हमने कर लिया. ओह अरे 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 सारा सामान पैक हो गया मैम का. ओह अरे कितना सही. ओह चली भी गई वो. ठीक है अब एक वो आन क्या नाम था उसका जो गॉब्लिन था तो उसका भी एक टास्क है वो भी करना है हमें. और ये बंदा कौन खड़ा है जो इतने बुरी हालत में खड़ा है यहाँ पे. You for some assistance. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley. ठीक है. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me?
Underwater adventure sounds like fun. हाँ, definitely. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. ठीक है. Should I know who your family are? What is an astrolabe? हाँ, ये क्या चीज़ है? What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. बढ़िया. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found definitely कुछ ना कुछ चीजें मिल सकती हैं हमें. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. ठीक है. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Okay. ये टास्क सिलेक्टेड हो चुका है ना, क्योंकि मैं ऐसा करने वाला हूँ. इंटरेस्टिंग लग रहा है और हमने अभी तक कभी पानी में डाइव नहीं किया है, तो ये ट्राई करना ही है हमें. हाँ, ये आई थिंक ये ऑलरेडी चल ही रहा है शायद. हाँ, ठीक है. इससे बात करने के लिए क्यों आ रहा है अभी? नो पाथ अवेलेबल फॉर ओपन क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. Grace, what is it you needed my help with? I was hoping you could dive down and retrieve a treasured family astrolabe lost during a doomed stargazing cruise. ठीक है, ये तो हमें पहले बता चुकी है. ये देखो उस तरफ सामने. अच्छा, ये तो वही है. हमें ढूंढना पड़ेगा. वैसे कैसे ढूंढेंगे हम? देखो उस तरफ कुछ आ रहा है. वहां पे जाने की जगह कैसे है? वो ये क्या है? हो सही. ये देखो उस तरफ मैं जा सकता हूँ. आई हैव टू ट्राई मैन. मैं आज तक पानी में गया नहीं हूँ, बट ट्राई तो करना ही पड़ेगा. ओ भाई साहब, ठीक है, हम लोग तैर सकते हैं. नाइस. अच्छा, This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. एम्बिशियस क्लोक. ओ भाई, एक नया ड्रेस मिला है हमें. ठीक है. यहाँ पर कुछ है. ओ ओके क्लॉक. ओ भाई, ये टास्क बहुत सही था यार, लिटरली. यहाँ पर कुछ है. अच्छा, हमने किया. भाई कपड़ों पर कपड़े मिले जा रहे हैं भाई. एस्ट्रल मोज़ेक रोब. बढ़िया. ठीक है, अभी और ढूंढना है हमें. यहाँ पर कुछ है शायद. यहाँ पर है. एक नई हैट मिली है, डार्क सन हैट. बढ़िया यार, ये तो बहुत सही टास्क है भाई. ऐसा टास्क तो और करवाते रहो हमसे. ओके.
वहाँ पर कुछ है। ऊपर देखो हॉगवर्ट्स कितना सही लग रहा है रात में। फैमिली एस्ट्रोलैब मिल चुका है हमें, विगनविल पोशन में मिला है। आई थिंक इट्स डन। I should let Grace know that I found her family astrolabe. चलो बढ़िया हो गया ये। अब इसके बाद वो एक गॉब्लिन वाला टास्क है, वो भी करना है हमें, और हम इतने अंधेरे में जाएंगे पता नहीं, पर चलिए देखते हैं क्या होता है। मज़ा आया, अच्छा टास्क था यार। ये पत्थर फेंके हैं, ये बड़े सही लगा मुझे। देखो अभी सही है, ये चले जाते हैं। हो गया मैडम जी, आपका काम हो चुका है। Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. बढ़िया। You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. अच्छा, okay. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Quest complete, the lost astrolabe. ओह, एक मास्क मिला है, बढ़िया। 10 साइड क्वेस्ट्स हैं, बाप रे। ठीक है, चलिए गियर चेक करते हैं अपना। बहुत ही मासिव गेम है यार ये, कसम से। हाँ, तो सबसे पहले तो एक जादू की छड़ी का, हाँ, ये हैंडल मिला था हमें। एक ये है, नहीं सॉरी, ये वाला है वो। अच्छा है, क्यों कर लिया ना इसने। हाँ ठीक है, ओके। और उसके बाद दोस्तों हमें हेड गियर भी मिला था। इसका देखो जैसे 19 है, इसका है 22। ओह कैसा है? ओह सिंपल है बट अच्छा है, ठीक है चलेगा। हाँ, आउटफिट में भी हमें काफ़ी कुछ मिला था। इसका 19 डिफेंस है, ऑफेंस 19, 15 ऑफेंस, 15 ऑफेंस। इसका कितना था? 11 था। ओ भाई ये ड्रेस तो ओह थोड़ी सी सिंपल है बट धांसू है। ये तो अपनी है, नहीं अपनी, हाँ शायद अपनी एस्ट्रल। हाँ ये लेने वाले हैं हम लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑफेंस है। बढ़िया, ठीक है। बाकी सारी ड्रेसेस हम लोग सेल आउट भी कर देंगे। नेक वेयर में कुछ है नहीं। एक मास्क भी मिला था अपने को, कहाँ गया वो? ऐसा लगा था मुझे मास्क मिला था हमें शायद। फेस वेयर में, हाँ यार मास्क मिला था, दिख तो रहा नहीं मुझे। ओके ठीक है, अब हम लोग करेंगे जो एक साइड क्वेस्ट था, प्रोफेसर हैकेट्स असाइनमेंट। ठीक है, कार्टेड अवे, हाँ ये वाला आन का, हाँ आन मेंशन हिज कार्ड्स। हाँ ठीक है, ये वाला मिशन करते हैं और उसके बाद फिर हमें हॉगवर्ट्स जाना है, शायद वहाँ पे हमारी कोई क्लास है। ठीक है चलिए। वापसी में आकर अपने पुराने कपड़े भी हम इसे बेच देंगे। वो तो है ही है। इसका एक टाइम पे देखना रैन रॉक से भी हमारा मुकाबला होगा। गो टू द गॉब्लिन कैंप। या जब ये नए लोकेशंस पर जाते हैं ना, ये गेम थोड़ी सी ना अटकने लगती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। An encampment. This must be it. ठीक है, आई थिंक गुंडू का कैंप है। ओहो कैंप तो बहुत बड़ा लग रहा है और अंदर 3 बंदे दिखा रहे हैं मुझे। Oi, pass that fire whiskey over here. ओ बहुत बंदे अंदर यार। As if there's more than one way to enter. Anne will regret not joining us. See him come round now, he'll be made even more of an example. We should have killed that traitor, Anne, when we took his cards. ठीक है, एंट्री करने के और कोई जगह तो नहीं दिख रही मुझे। काफ़ी बंदे हैं और इनसे हमें 2 टास्क करने हैं।
एक तो क्रॉसबो छीनना है और एंशिएंट मैजिक यूज़ करनी 2 बार। ठीक है, वो तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सारा एरिया सर्च आउट कर लेते हैं। ये कहीं और की तरफ, और रास्ते की तरफ क्यों इशारा कर रहा है ये? I've never seen a sword like it. यहाँ पर जाने के लिए क्यों कह रहा है? मुझे ऐसे घुमा के ले जा रहा है क्या ये? हाँ, ये वहीं लेके जा रहा है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम जंप करके जा सकते हैं? नहीं, शायद लग नहीं रहा मुझे। मे बी Patrolling this area is a waste of my time. ठीक है, गेट तो बंद है, जाएंगे कैसे पार? वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, ओके। Oh, this day has gone on too long. स्टेल्थ अटैक तो हम लोग शायद ही मार पाएंगे। एक है यहाँ पर है, गॉब्लिन है ये। ठीक है, नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते हम लोग। We'll reclaim what is rightfully ours. टार्च एंड ब्लेजर स्कूल यूनिफॉर्म, एक हमें यूनिफॉर्म मिला है, बढ़िया है। ब्रुशफुल वूल केप भी मिली है, सही है। ऐसी जगह पे जाने का फ़ायदा है भाई, क्योंकि डेफिनेटली मस्त चीज़ें मिलती हैं। मैं एक बार अपने गियर्स अपग्रेड कर लूँ, फटाफट से कर लेते हैं। हमें मिला है ये 20, मेरे पास कितना था? 19 मैक्स था। ओ भाई साहब, खतरनाक। ठीक है, और एक यूनिफॉर्म भी मिली थी हमें। 21 डिफेंस, बहुत बढ़िया यार। वो देखो तो सही, भाई खतरनाक हो गया अपना तो ड्रेस। ओके, ठीक है भाई, जाना तो यहीं से पड़ेगा अब सीधा। अच्छा, बिना पकड़े गए। Enchantment. The carts are returning to on. ठीक है, इंचैनमेंट्स वो, अच्छा उसके वो कार्ड्स तो अपने आप ही जा रहे हैं उसके पास। अच्छा, मैंने ये गेट को, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गेट खोल दिया, अपने आप जाने लगे। ये कार्ड देखो अपने आप जा रहा है। ठीक है, वो तो गया, वो तो गया। और किसी को पता नहीं लगा वैसे अभी तक। नहीं, पता लग चुका है ना। ठीक है, ओए 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 ओए, ठीक है। ओहो, आराम से। ठीक है, इजी। How many of you are there? How nice of you. Who do you think you are? Incendio. बढ़िया, ठीक है, भी गया। नाइस 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 नाइस। ओए भाई, ओए ओए। That was meant for me. ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है भाई। आजा आजा। अटैक नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है अटैक ये? ओह, अरे भाई साहब,
Will unite us? Potato. ठीक है, इसको मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। Not very good at it. Not quite. Incendio. इजी इजी, आराम से आराम से। Incendio. Not quite. I've been fighting since before you were. ठीक है ठीक है ठीक है, Won't stop me. ये यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है अब। Why have you not run away? You intend to die, do you? I shall have been an agony pity for this land. ओ भाई, ये तो हाँ, तो बड़े खतरनाक खतरनाक बनते हैं भाई। Incendio. ठीक है, तो क्या? I will make you pay. Was that your bet? Oh shit! Your spells glance off of me. Shit यार, ये बड़ा गंदा मार रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, निकल निकल यहाँ से निकल। ओह, Not go well for you. बस हीलिंग नहीं है। निकल यहाँ से, निकल 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 निकल। ठीक है, वो तो गया। इसको मार पहले तो। ठीक है, वो तो गया, वो खत्म हो गया। कहाँ गया ये? What an unfortunate disappointment. बढ़िया गया। इससे भी कुछ डब्बा डब्बा मारना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसका एक बार शील्ड तोड़ लूँ ना मैं। आई नीड अ बॉक्स मैन। कैसे मारूँ इसे? कोई बॉक्स है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे है, ठीक है। नाइस, बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। एक लास्ट रह गया, वो रहा उधर, उस तरफ है शायद, है ना? ठीक है, इसकी क्रॉसबो चाहिए मुझे। That was quite something. क्रॉसबो बोल्ट, यार ये मुझे मिला क्यों नहीं? ओके, ठीक है। ये कैंप तो हमने खाली कर लिया। आन के पास भी जाना है हमें, जाएंगे वो तो बाद में। और यहाँ पर ये भी है। Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. ठीक है, पहले एरिया सर्च करते हैं, क्योंकि हमें, अच्छा यहाँ पे देखो कुछ है। ओ, इन पे कुछ गोले। ओके, हाँ ये देखो, ये बॉल्स। ओके, मुझे लगता है मुझे एक नया जादू यूज करना पड़ेगा। वो था लिफ्ट, लेवियोसो ही है शायद, है ना? जहाँ तक मुझे लगता है लेवियोसो से काम बनना चाहिए। और यहाँ पे ड्रॉप करने हैं ये।
अरे वहीं रह गए वो। ओके ठीक है, फिर से। ठीक है, एक तो हो गया। इसके लिए बॉल्स ये रहे। सही। यहाँ बाहर है। ओके तो इसके बॉल्स किधर हैं? ये इधर है। हो क्या सही है यार। हाँ ये वियर्ड है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? हाँ बॉल से देखो ना। अच्छा अच्छा देखो, मुझे शायद ये करना पड़ेगा। हाँ लग ही रहा था। चलिए बढ़िया, सॉल्व हो गया शायद। अरे क्या हुआ? अभी भी कुछ बचता है क्या? हाँ ये लग चुका है। अरे यहाँ पे एक बॉल मिसिंग है। अब हुआ यार। ठीक है चलिए, ये भी सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है। अच्छा मर्लिन ट्रायल्स पे हमने पूरा कर दिया। ठीक है बढ़िया है यार, नाइस। यहाँ पर कुछ मशरूम्स हैं, शायद हम लोग को काम आएगा। इसका मुझे समझ नहीं आया, इसका कुछ है क्या? कि यहाँ पे इसके पीछे ये था। ठीक है, एक टार्टन सनराइज स्कार्फ मिला है हमें। हाँ ओ गजब यार। अच्छा ओ सही। नाइस यार, नाइस 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 नाइस। ठीक है, ग्लव्स मिले हैं। If you're here for my wares. On, I have good news. Your carts are on their way back. अच्छा वो शायद हवा में कार्ट था ना, वो इसी का ही था। What to say? Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. बढ़िया। It was difficult. हाँ difficult तो था The भाई। ones I faced were determined to make things difficult. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. That sounds wonderful. What a nice idea, On. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. चलिए बढ़िया। ये वाला क्वेस्ट भी हो गया है। हमें मिला गॉब्लिन मेड हेलमेट। All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. अच्छा बढ़िया। मेन क्वेस्ट करना है हमें। ये द हंट फॉर द मिसिंग पेजेस। नियरली हेडलेस निक मे बी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिसिंग पेजेस आई सीक। ओह अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये हमारा एक स्टोरी मिशन है जिसमें हमें ये नियरली हेडलेस निक के पास जाना है, जो हमें वो जो बुक मिली थी ना, मैं जादुई किताब, उसके मिसिंग पेजेस के बारे में बता सकता है कुछ। ओके ठीक है चलते हैं। ओ ये रहा। You there? Yes, you. I wonder if you might come with. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. ठीक है। Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me if you will. It's not too far. ठीक है। Wait. The hunt for the missing pages. How do you know about the book and that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry,
Your secret's safe with me. Revelio. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. जरूर, क्यों नहीं? Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. ठीक है. I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. I suppose I can do that. It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. ठीक है, इनके लिए कुछ मीट वीट लेके आना है, उसके बाद फिर हम ये पेजेस के बारे में बताएंगे. चलिए सर, चलिए. हो सके तो थोड़ा जल्दी चलिए. Revelio. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. ये किचन है? Obtain rotten roast beef, ठीक है. Rotten roast beef हमें ढूंढना है. And the kid students wanted delicious food and found themselves a bit peckish lately. Certainly you know how makes Rookie's job easier. Here's a welcome treat. Delicious. Rotten roast beef कहाँ होगा यार? Verdant hat मिला है हमें. Revelio. Ah, there's a disgusting smell. Oh, I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Thank you. I should be going, huh? It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. ठीक है, चलिए ये काम तो हो गया. Revelio. यहाँ पर एक गाइड पेज है. I've gained a new appreciation for breakfast. House elf living quarters, ठीक है. ठीक है, एक नया हैंडल मिल गया हमें जादुई छड़ी के लिए. चले चलते हैं यार निक के पास. निक को रॉटन मीट देते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से. It smells glorious in here. कहाँ से आए थे हम? यहाँ से आए थे. Ah, you're back. No trouble, I take it. Not at all. Finky sends her regards.
along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those. Sir Patrick Delaney. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organises the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? ठीक है, बहुत अजीब सा ही है भाई, जो भी है. Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Do stay behind me. It's Sir Patrick. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you? Nearly headless, Sir Ramsay, do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. ठीक है, उसका सर ढूंढना होगा हमें, Jackdaw का. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. ठीक है, बेचारे सर निक इनको निक को तो मिला नहीं, टीम में ज्वाइन नहीं करवाया इन्होंने. अब हमें उन जैकडॉ जी का सर ढूंढना है. What is this? Nothing like the feeling of a breeze through me. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. यहाँ पर नीचे जाने के लिए कह रहा है मुझे. यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. What say you? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous!
course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. भाई साहब 5 बार ढूंढना है. Begin! I'm glad I will clean up this mess. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. But that ghost said I should... what fun! A student is playing! You make this look easier than it's supposed to be. Revelio. I could do that too if I had a wand and a body. ठीक है 3 बार तो ढूंढ लिया हमने. बढ़िया. But we're not through with you. Keep looking. You're sure to find him. I've never seen it played like this. How delightful. यहाँ कहीं छुपाएगा कि यहाँ कहीं आया था वो रहा देखो. ऊपर जाना पड़ेगा. हाँ वही छुपाया हुआ है क्योंकि हिल रहा है ना वो. I would be the one to clean up this mess. देखो ये रहा. Why did I come back here? Oh, what fun! A student is playing. ठीक है ये रहा ये रहा ये रहा. ये रहा. चलिए ढूंढ लिया. बढ़िया हमने. Well done! Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. कोई cave के बारे में बात कर रहा है. Why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest and I'll show you where to go? Forbidden Forest? एक बार इससे पूछो what's in the cave, man? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? बताएगा नहीं है. ठीक है. Who cut off your head? How did you steal from the thieves? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Sensed a refreshing breeze. When you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Beware a light breeze. Okay, very well. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first, but Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. भाई साहब, ये तो खतरनाक ही हो गया अब. ठीक है, हमने ये मेन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है. Hunt for the missing head. ठीक है, ईस्ट नॉर्थ फोर्ट वॉक. ठीक है दोस्तों, आई थिंक यहाँ पर हमें एपिसोड एंड करना चाहिए. तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं. तो अब दोस्तों 2 चीज़ें हैं. हमें लाइक फाइनली जो वो हमने बुक ढूंढी थी उस लाइब्रेरी के अंदर, उसके जो मिसिंग पेजेस थे उसके बारे में पता लग चुका है. जैकडाउ नाम के भूत से हमारी मुलाकात हुई और वो बता रहा है कि लाइक फॉरबिडन फॉरेस्ट में कोई केव है जहाँ पर वो पेजेस पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ है जिसने उस लाइक जैकडाउ का सर काटा था और हमें उससे मुकाबला करना पड़ेगा उन पेजेस को हासिल करने के लिए. लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें एक मैजिकल स्पेल सीखना है जो कि है डिसार्म करने का, और ये सीखने के लिए हमें प्रोफेसर हैकेट के पास जाना है. ये मैजिकल स्पेल सीखने के बाद ही हम लोग जैकडाउ के साथ इस फॉरबिडन फॉरेस्ट में मौजूद केव के अंदर जा सकते हैं.
और दोस्तों ये दोनों मिशंस हम लोग अब अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे लाइक्स, आपके प्यारे सब्सक्रिप्शंस और आपके प्यारे कमेंट्स मुझे बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे अपलोड्स करते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से मिलूंगा अब मैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।